Welcome to the lecture on non-tariff barriers. Countries commonly use non-tariff barriers in international trade. Decisions about when to impose non-tariff barriers are influenced by the political alliances of the country and the overall availability of goods and services. In general, any barrier to international trade, including tariffs and non-tariff barriers, influences the global economy because it limits the functions of the free market. However, countries can use non tariff barriers in place of or in conjunction with conventional tariff barriers, which are basically taxes that an exporting country pays to an importing country for goods and services. Tariffs are the most common type of trade barrier which we dealt with in our previous online lectures. Non-tariff barriers includes quotas, licenses, embargoes, etc. In the post 1930 Great Depression era, after the Second World War, countries increasingly resorted to non-tariff barriers as an alternative to tariffs. This was more so as international organizations like GATT created pressure to remove quantitative restrictions in international trade. Yet, many developing and underdeveloping economies stuck to non tariff barriers for their economic well being. In this chapter, we shall explore the non tariff barriers, especially import quotas, their objectives, types, and effects on the economy. प्रशुल्क निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, परंतु व्यापार की कुछ अन्य बाधाएं भी पाई जाती हैं। इनमें आयात कोटा, स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य विनियम रुकावटें, राशि पतन और निर्यात अनुदान शामिल होते हैं। प्रशुल्क के विकल्प के तौर पर विश्व ने आयात कोटा और अन्य व्यापार बाधाओं पर 1930 की मंदी के बाद काफी निर्भरता दिखाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य समझौते गैट जैसी संस्थाएं सदस्य देशों पर प्रशुल्क की दीवारों को गिराने के लिए दबाव डालती रहीं। फलस्वरूप विकसित और कम विकसित देशों में अपने आर्थिक और अन्य हितों को प्राप्त करने के लिए गैर प्रशुल्क व्यापार बाधाओं को अधिक मात्रा में प्रयोग करने की चेष्टा और झुकाव रहे। वर्तमान अध्याय में गैर प्रशुल्क बाधाओं और उनके प्रभावों से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। There are different kinds of tariffs and different kinds of non-tariff barriers. In our previous lecture, we have already discussed the different kinds of tariffs. Now we come to discussing the different kinds of non-tariff barriers. The different kinds firstly delve into licenses. पहले प्रकार है license. Countries may use license to limit imported goods to specific businesses. If a business is granted a trade license, it is permitted to import goods that would otherwise be restricted for trade in the country. अनेक प्रकार की विधि द्वारा एक देश लाइसेंस का प्रयोग कर सकता है, जिससे आयात किए गए वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को नियंत्रण में रखा जा सके। A country can offer different ways in which license are provided to the industries. तरह तरह के विधियों द्वारा लाइसेंस को लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा आयातकर्ताओं को दिया जाता है। The second is embargoes. Embargoes refer to that kind of non-tariff barrier where
a country or several countries officially ban the trade of specific goods and services with another country. Governments may take this measure to support their specific political or economic goals. एम्बार्गो जिसे हम अधिरोध या घाटाबंदी भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक या एकाधिक देश किसी एक विशिष्ट वस्तु के व्यापार तथा एक विशिष्ट देश से व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा कोई भी देश अपना राजनीतिक अथवा आर्थिक उद्देश्य पूरा करने के लिए अपना सकता है। Thirdly comes sanctions. Countries impose sanctions on other countries to limit their trade activities. Sanctions can include increased administrative actions or additional customs and trade procedures that slow or limit a country's ability to trade. एक देश दूसरे देश से आयात पर प्रशासनिक रुकावटें लगा सकता है, जो व्यापार के विनियम, अतिरिक्त सीमा शुल्क या व्यापार के अलग-अलग नियमों पर आधारित करके या उसके रूप में हो सकते हैं। इससे व्यापार में कमी तथा उसकी गति को धीमी की जाती है। Fourthly, we have voluntary export restraints. Exporting countries sometimes use voluntary export restraints. Voluntary export restraints set limits on the number of goods and services a country can export to specific countries. These restraints are typically based on availability of goods and services and political alliances. निर्यातक देश अक्सर स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें लागू करते हैं, जिससे निर्यात की मात्रा पर नियंत्रण या सीमा लगाया जा सकता है, परंतु यह राजनीतिक गठबंधनों का ध्यान में रखते हुए ही अपनाया जाता है। And last but not the least comes in quota. Countries often use quota for importing and exporting both goods and services. With quotas, countries agree on specified limits for products and services that are allowed to be imported into a country. In most cases, there are no restrictions on importing these goods and services until the maximum limit of the quota is reached. This is done within a specific time frame, which is basically a fiscal year. Additionally, quotas are often used in international trade licensing agreements. कोटा के अंतर्गत एक देश आयात तथा निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर सीमा लागू कर सकता है। जब तक सीमा के अंदर आयात या निर्यात किया जाता है तो किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, परंतु सीमा के ऊपर जब आयात या निर्यात किया जाए तो प्रतिबंध लागू किया जाता है। अक्सर कोटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाइसेंसिंग समझौता में प्रयोग किया जाता है। Now let us understand the meaning of quota. What is a quota? Let us zero down to it. आयात कोटा का अर्थ विदेशों से आयात होने वाले विभिन्न उत्पादों की मात्रा पर एक विशेष समय अवधि में, जो प्राय 1 वर्ष की होती है, भौतिक अर्थ में सीमा लागू करना है। आयात कोटा को या तो मात्रा के आधार पर या फिर वस्तु के मूल्य के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। So import quota refers to the physical limitation of quantities of different products that are imported from foreign countries by a domestic country within a specific period of time. This period of time usually being 1 fiscal year. The import quota may be fixed either in terms of quantity or the value of the product. अगर हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे कि हम कोटा का अर्थ को और भी स्पष्ट रूप से समझ पाए।
मान लिया जाए कि भारत सरकार यह निर्धारित करती है कि एक साल में यानी 2020 से लेकर 2021 मार्च तक 60,000 रंगीन टीवी सेट जापान से आयात करेगा। तो इस निर्देश का अर्थ है कि मात्रा के आधार पर कोटा लगाया गया है। लेकिन वैकल्पिक रूप से अगर सरकार ये सुनिश्चित करती है कि एक विशेष वर्ष में 50 करोड़ रुपए के बराबर रंगीन टीवी सेट जापान से आयात किए जाएंगे, तो इस तरह का जो विनियम होंगे इसका अर्थ होगा कि कोटा मूल्य के आधार पर लगाई गई है। We can take an example to understand the meaning of a quota. For instance, if the government specifies and puts down a rule that in one given year, say from April 2020 to March 2021, 60,000 color TV sets can be imported from Japan, then it would mean that the quota is based on the quantity. Alternatively, if it is specified that 50 crore rupees worth TV sets can be imported from Japan in 1 year, then that would mean that the quota is based on the value of the product. इस तरह के आयात को विनियमित करने के लिए सरकार वैकल्पिक ढंगों से अपना लाइसेंस जारी कर सकती है। For the purpose of restricting imports, usually the government of the country adopts one of the alternative ways. सरकार खुले बाजार में सबसे ऊंची बोली देने वाले को आयात लाइसेंस जारी कर सकती है। The government can issue import license to the highest bidder in the open market. संभावित आयातकों से टेंडर मंगवाकर आयात लाइसेंस को जारी किया जा सकता है। Issues of import license can be done by calling for tenders from prospective importers and the highest tenderer can get the license. पहले आओ पहले पाओ अर्थात जो भी पहले अर्जी देता है उसके आधार पर आयात लाइसेंस को जारी किया जा सकता है। So issue of import license can be on the basis of first come first serve. Fourthly, the issue of import licenses of specific categories of importers such as established importers, star trading houses, actual users, etc. can be made. आयातकों की विशिष्ट श्रेणियों जैसे स्थापित आयातकों, सितारा व्यापार घरानों, वास्तविक प्रयोक्ताओं इत्यादि को आयात लाइसेंसिंग जारी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सरकारी एजेंसियां जैसे राज्य व्यापार निगम स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को आयात लाइसेंसिंग जारी किया जा सकता है। Apart from this, issue of import licenses to some government agencies like the State Trading Corporation may be done. Let us now view the objectives of quota. आइए अब कोटा के उद्देश्यों पर नजर डालें। विदेशों से आयात को सीमित करके विदेशी प्रतियोगिता पर नियंत्रण करके घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। So the first objective of quota is to afford protection to domestic industries through restriction of foreign competition by limiting the imports from abroad. Secondly, to make adjustment in the adverse balance of payments, the restriction of imports through quotas can reduce the balance of payment deficit faced by the country. प्रतिकूल भुगतान संतुलन में समंजन करना आयातों को कोटा के द्वारा सीमित करके एक देश भुगतान शेष के घाटे को कम कर सकता है। Thirdly, to conserve the scarce foreign exchange resources of the country and to direct their use for high priority import items.
देश के दुर्लभ विदेशी विनिमय संसाधनों के बीच बचत करना और उनका प्रयोग उच्च प्राथमिकता वाली आयात की मदों के लिए करना। Fourthly, to ensure the stabilization of the internal price level by properly regulating the imports of goods from abroad. ऐशो आराम की और विलासिताओं की वस्तुओं के आयात पर कोटा नियंत्रण लागू करने, धनी वर्गों के द्वारा दिखावे के उपभोग को निरुत्साहित करना। In the fifth objective, it is to discourage conspicuous consumption by the wealthy sections through spacing and placing quota restrictions on the import of luxury items. विदेशी वस्तुओं के आयात को उचित ढंग से विनियमित करके आंतरिक कीमत स्तर का स्थिरीकरण भी करना। It is to ensure the stabilization of internal price level by properly regulating the imports of goods from abroad. To retaliate against the restrictive trade policies adopted by some of the foreign countries, कुछ अन्य देशों के द्वारा लागू की गई प्रतिबंधनात्मक व्यापार नीतियों के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही करना। ऐसे देशों जो घरेलू देश के या घरेलू देश से वस्तुओं के उदार अंतर्वाह की आज्ञा देते हैं, उनके उत्पादों के लिए अधिक आयात कोटा वितरित करके देश की अंतर्राष्ट्रीय सौदा शक्ति में सुधार करना। To improve the international bargaining position of the country through allocating larger import quotas for the products of such countries as that allow a liberal inflow of the products of the home country. And lastly, to check the speculative imports in anticipation of changes in exchange rates, tariff rates, and internal money and credit policies, the government may take resort to import quota. विनिमय दरों, प्रशुल्क दरों और आंतरिक मुद्रा और साख की नीतियों का पूर्वानुमान करके सट्टे के आयातों को रोकने के लिए सरकार आयात कोटा का प्रयोग कर सकती है। So these were the basic objectives of quota. We will continue in our next lecture with the different kinds of quota. अगले लेक्चर में हम लोग कोटा के विभिन्न प्रकारों पर विचार करेंगे।